जीवन हमें साधारण विकल्प देता है। हम पारंपरिक मार्ग चुन सकते हैं या अपना रास्ता बना सकते हैं। 2017 में केनरिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का सपना गुजरात में जन्मा। केनरिक ने भारतीय आभूषणों की दुनिया में कदम रखा। यह एक छोटा कदम था, लेकिन महान आशाओं से भरा हुआ था। श्री नितिन कुमार दलपत भाई शाह, प्रबंध निदेशक, ने केनरिक को भारत की समृद्ध आभूषण परंपरा को पोषित करने का एक तरीका माना। केनरिक सुंदर सोने के आभूषण बनाता है। हर टुकड़ा एक कहानी कहता है, एक स्मृति को संजोता है। हर वस्तु को एक कला के रूप में तैयार किया जाता है। कुछ कीमती हीरे और माणिक होते हैं। केनरिक इंडस्ट्रीज ने चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनकी दृढ़ता और शिल्प पर ध्यान केंद्रित करते हुए वे आगे बढ़ते गए। केनरिक इंडस्ट्रीज ने B2B मॉडल चुना। वे अपने आभूषणों को सीधे नहीं बेचते, बल्कि अन्य व्यवसायों के साथ साझेदारी करते हैं। ये साझेदार खुदरा विक्रेता और थोक व्यापारी होते हैं। केनरिक की रचनाएं विभिन्न स्थानों पर पहुंचती हैं। अहमदाबाद, गुजरात में उनके निर्माण सुविधा में कुशल हाथ सोने और पत्थरों के साथ जादू बुनते हैं। यह हस्त निर्मित सुंदरता का सार है। प्रत्येक कारीगर अपने आत्मा का एक हिस्सा उस टुकड़े में डालता है। केनरिक अनुकूलन को महत्व देता है। वे अपने साझेदारों के साथ मिलकर विशिष्ट डिजाइनों को जीवन में लाते हैं। कार्यशाला में प्रत्येक व्यक्ति प्रक्रिया के अपने हिस्से के लिए समर्पित है। यह गहरा समर्पण, प्रत्येक कारीगर की उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता केनरिक के आभूषण को विशेष बनाती है। विश्वास एक नाजुक धागा है। केनरिक इंडस्ट्रीज इसे गहराई से समझती है। गुणवत्ता उनके लिए एक मार्गदर्शक सितारा है। वे मानते हैं कि हर आभूषण का टुकड़ा परिपूर्ण होना चाहिए। BIS हॉलमार्क सोने में शुद्धता का प्रतीक है। केनरिक सुनिश्चित करता है कि उनके सभी सोने के आभूषण BIS हॉलमार्क से प्रमाणित हों। उनके BIS हॉलमार्क पंजीकरण संख्या इस अटल प्रतिबद्धता की घोषणाएं हैं। सोने की सोर्सिंग में बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। केनरिक एक लचीली सोर्सिंग रणनीति बनाए रखता है। वे विभिन्न विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं से सोना प्राप्त करते हैं। यह अनुकूलनशीलता उन्हें सोने की कीमतों में अस्थिरता को प्रबंधित करने में मदद करती है। गुणवत्ता नियंत्रण उनकी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। हर चरण को सावधानीपूर्वक मॉनिटर किया जाता है। यह मेहनत न केवल सुंदर आभूषण बनाती है, बल्कि उनके B2B साझेदारों के साथ मजबूत संबंध भी बनाती है। Section 4. Stepping into the light. The journey of growth and the IPO. A company, much like a living person, goes through phases of growth and development. Kenrik Industries Private Limited became a public limited company in April 2018, becoming Kenrik Industries Ltd. This was not just a change in name or legal status. It was a significant move towards a larger dream. This transformation signaled their ambition to grow further. It also showed their readiness to embrace new challenges and responsibilities. In April and May 2025, Kenrik Industries launched their initial public offering, or IPO. This was like opening their doors wider, inviting more people to become a part of their journey. Through this IPO, they aimed to raise 8 crore 75 lakhs rupees. This capital was earmarked for growth, primarily by strengthening their working capital. The IPO marked the beginning of a new and exciting chapter for Kenrik. The funds raised would empower Kenrik to serve its business partners more effectively. It would enable them to manage larger orders and streamline their production processes. The response from the market to Kenrik's IPO was encouraging. The issue was subscribed, indicating that people saw merit in Kenrik's story and its future prospects. This belief from investors was a heartening validation. Subsequently, the company's shares were listed on the BSE SME platform. This was a moment of immense pride and achievement for everyone associated with Kenrik. It stood as a testament to their years of hard work and their clear vision for the path ahead. The journey forward indeed looked bright and full of promise. Section 5. A trusted friend in business. Kenrik's vision for the future. The world of jewelry in India is vast and vibrant, like a grand, colorful tapestry. Many skilled players, both large established names and smaller independent artisans, contribute to its richness. It is undoubtedly a competitive field, where each one strives to shine. Yet, within this bustling marketplace, Kenrik Industries has carefully carved its own unique path. They focus on creating traditional Indian handcrafted gold jewelry.
This dedication to a specific craft is their distinct strength. It allows them to offer something truly authentic and valuable to their partners. So, how does Kenrik stand apart in such a crowded arena? They listen to and collaborate with their B2B partners. They excel in creating customer-specific designs. This makes them very different from many others. They aim to be true collaborators, working hand in hand with their partners. Building such reliable and understanding partnerships is a rare and precious achievement. Their mission is to be a trusted and reliable partner in the traditional Indian jewelry market. They uphold and promote the exquisite art of Indian craftsmanship. Ultimately, they wish to bring joy and satisfaction to those who wear their creations. Their story is about passion, perseverance, and the enduring power of human enterprise. It is a story that has the quiet strength to inspire others to pursue their own dreams with dedication.